हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल से आपके बैंक ऑफ इंडिया आईटी ऑफिसर के इंटरव्यू स्टार्ट हैं। तो उसके पहले बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं उनको एड्रेस करना है, तो मुझे लगा कि एक लाइव सेशन के थ्रू हम ये सब डिस्कस कर सकते हैं। तो आई विल वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स फॉर एवरीवन टू जॉइन, देन वी विल स्टार्ट दिस लाइव स्ट्रीम। ओके। Okay, so we'll start discussing the questions that you have given me. सबसे पहले एक सबसे कॉमन चीज़ है जो सबके लिए मुझे लगता है कि यूज़फुल है, जो आप सब ध्यान रख सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू हो, ये बहुत गलती होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों की ये गलती होती है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने जितने लोगों से बात की, उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताया, अपने मम्मी का नाम बताया, अपने पापा का नाम बताया, अपने भाई और बहन का नाम बताया, वो क्या करते हैं ये बताया। अब आप एक बात समझिए, वहाँ पे आपको वो 15 से 20 सेकंड मिले हैं। अब वो जो टाइम मिला है उसमें आप ये हाईलाइट कर सकते हैं कि आप क्यों ये जॉब करना चाहते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं जो इस जॉब के साथ अलाइन कर रहे हैं, आपका इंक्लिनेशन इस तरफ क्यों है, आपकी क्या स्किल्स हैं जो यहाँ पे मदद कर सकती हैं। अब इन सबको छोड़कर, और अगर आप अपनी फैमिली हिस्ट्री बस बताकर और वहाँ बंद कर देंगे, तो एक्चुअली यू आर गिविंग नथिंग आउट ऑफ दोज 15 to 20 seconds टू दैट इंटरव्यूअर। तो उसके बाद उनको और आपको समझने के लिए, देखिए, वो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं जो हमारे पूरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो गलती होती है कि हमने बस ये डिटेल्स दे दी कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं और हमारे भाई बहन क्या पढ़ रहे हैं, या भाई बहन कहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उससे हम कुछ भी, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। ये बात आप समझिए, और उनको भी कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है वहाँ पे। तो यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन बाय इंक्लूडिंग योर नेम। जैसे कि आप पहले ये बताएंगे, ओके, तो कपिलेश जी इज सेइंग टू प्लीज़ कंटिन्यू इन इंग्लिश। ऑल राइट कपिलेश जी, so I also wanted it to be inclusive for everyone, so okay, English is good. That's what we'll do. Okay. All right, Saniji is asking the people who are not working right now how they should answer this question. I'll tell you some tips about that. Okay, so I was telling you that, okay, let's say I'm one of the aspirants, I'm appearing for the interview. I'm not currently working. So if I'm not currently working and I've just finished my graduation engineering or whatever it is, so how am I going to answer this question? I will start with greeting them with a smile. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Then I will move on to my introduction. Although I have not prepared an introduction right now, I'm just trying to give you idea of what you can include. So I'll just try. Okay. So my name is Shubhi Chaube. I'm from Chinwara, Madhya Pradesh. I have completed my graduation in computer science and engineering in the year 2018,
and you can include the college name as well if you want. It's not absolutely necessary. Your field of study is more important, but yes, you can include that. Then, so this was the basic part of my introduction. Then I can talk about that. Let's say I have done a project in my final year. I'm not currently working. I'm not working anywhere. I don't have any experience, anything at all. बट टॉकिंग अबाउट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या फिर जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं रेलेवेंस की, जैसा हमने बात की थी, सो आई कैन से in my final year, talking about my experience in the field of computer science, or talking about my projects. So in that, I'll say I have worked on a project in which we have implemented SQL injection, and we have जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया होगा या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हुई होगी जो आपने की होगी, जैसे आई हैव वर्कड इन अ प्रोजेक्ट related to Internet of Things, and we have made a solution for ATMs to detect the light electricity usage, how they can minimize the electricity usage with the use of sensors, and with the use of Internet of Things as a whole, how they can minimize the wastage of electricity. तो ये हो गया एक, ठीक है। अभी हमने कुछ भी दिमाग में नहीं रखा था कि क्या है प्रोजेक्ट, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैंने बस एक रैंडमली आपको ये बताया कि सो सॉरी यू आस्क्ड मी टू कंटिन्यू इन इंग्लिश, ओके। सो I was just telling you that when I'm giving my introduction, I'm going to tell them why am I interested. So, good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Shubhi Chaube. I'm from Chinwada, Madhya Pradesh. I have done my schooling from Chinwada itself, and my graduation from my graduation from Indore in computer science and in engineering. Post my graduation, I have completed some certification courses related to IT security. I feel that I am an ideal candidate for this role because of my interest in this field, and I think that my skills can be best utilized if I work in this particular sector. Okay, तो ये हुआ। अब मैंने बहुत रफ आइडिया दिया है आपको, बहुत रफ आइडिया। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू रिपीट। आई विल गिव यू अ बेटर सैम्पल एज वेल, बट द पॉइंट हियर इज, if I start my discussion, my name is Shubhi Chaube, my mother's name is Rashmi Chaube, my father's name is Suryakant Chaube, my brother's name is this, my brother is working here, my mother is working here, my father is working here, that is not going to give any benefit to anyone. So that's the first thing that we should note. Now, apart from that, what other mistakes other people the people commit? So I have seen aspirants who just keep on telling the interviewers that since I don't have any other options, since I don't have any better opportunities, so this is the best that I can get at this time, so that's why I want to join. So that is such an insulting answer. You should not do that. You should never do that. So don't try to demean any job, right? And even if you were working somewhere else, you should not say that that organization was toxic, or that organization made me work for too long, the working hours were not suitable for me or something. So that sounds negative, right? That you're not willing to work if let's say there's a requirement in bank, they need you, there is an urgency, there's some major issue in the data center, and you actually have to go there at whatever time it is required. You have to be there, you have to work. You cannot say that my working hours 10 to 6, I'm not going to stay any longer. So that's not how it works now. So every answer that you present there, it is going to tell something about you. Now what I was trying to tell you, my one of the intentions of taking this session was, I wanted to tell you that where your interview is going to go, in which direction it is going to move, that depends on how you start it. You have a very good option, you have a very good opportunity while you start your interview. You can in the tell me about yourself, let's say in my introduction, if I include that I have been fascinated with the banking technologies, if let's say, I'm interested in that, and I convey it in that
mm, in this in that particular interview as well. So what is going to happen, they will get an idea that whatever. Okay, just a moment, I think some issue with the bandwidth. Okay, now it's working fine. All right. So I have seen some very good introductions. So there were some aspirants who introduced themselves, and they told in the introduction itself they gave a question. See, you can leave the first question in such a way that out of curiosity the interviewer is going to ask you that, oh wow, that sounds interesting, tell us about that. So let's say you're talking about your project that you have or it can be any internship as well, it can be a project as well. If you do not have any experience, that's not an issue as well. So in that case, what is going to happen, you can tell them that I have read a lot about this, I am fascinated by the technology and banking technology, and these are the things that I'm interested in. जो भी है, whatever it is, you have to just let them know. उनको आप बताओ कि आगे क्वेश्चंस कहाँ से पूछने हैं, हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. I want to tell you all that language is not a barrier in the interview. The point of language is it is just a medium of communication. It is not at all going to impact your selection if you are appearing for interview in Hindi as well. आपके सिलेक्शन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी में दे रहे हैं या इंग्लिश में. बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहें, ठीक है. सो even I'm telling you, when I appeared for the interview in the year 2019, I had no issues with English, but still I preferred to appear for this particular interview, IT officer, bank IT officer interview in Hindi. And reason being, I thought that I'll be able to communicate my thoughts better. वो जो एक बेहतर तरीके से मैं चीज़ों को समझा पाऊंगी, मुझे लगा था. और वो चीज़ सच में है, जिस लैंग्वेज में हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें. वरना देखिए, अगर आप अननेसेसरीली इंग्लिश में देते हैं ना, तो होगा ये कि वो रटे हुए से आंसर साउंड करेंगे और बिल्कुल भी उसमें कुछ जेन्युइन नहीं लगेगा. और बिल्कुल भी जैसे कोई आपको कोई रटा हुआ कुछ सुनाता है तो आपका सुनने का मन नहीं होता है, राइट. सो नो वन वुड बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू. Okay, so just understand this point that language is just a medium of communicating your answers and nothing else, and they should know that your clarity of thoughts, everything that should be the main mm, point of concern for you. So just some people, what they do, some people have very good communication skills, and what they do, as soon as a question is asked, so they just start blabbering about anything and everything. So that is also a negative thing. You're too good in communication, it's okay, but you're not working here just for the communication. You have to use your mind, you have to have some clarity of thoughts. So always remember, the main intention is to, for them, it is to understand you. They just have, they don't know you from the like last 25 years of your life. They just know you for those 10 to 15 minutes. Now it is up to you what you are conveying there. So either I can be fake, I can just try to use some fancy language and some answers which are definitely not my own. If I'm doing that, they will get a feeling that this person has just mugged up everything. So that is not going to leave any positive impression. So you should not be doing that. All right. Okay, now next doubt हमारे पास आ चुका है, तो let's see. मैम, वर्किंग लोग जो हैं उनसे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई क्लरिकल कैडर में ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं. बिल्कुल. तो देखिए क्या होता है, जब आप वर्किंग होते हैं तो आपसे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं. लाइक वाइल आई वाज वर्किंग इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज एन IT ऑफिसर, I appeared for another interview for NABARD IT officer. So in that, the question they asked was how question was that how your experience that you had from Union Bank of India can help us here. तो आपका जो
पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें और अभी जो प्रेजेंटली आप जिस जॉब में जा रहे हैं उसके बीच में क्या लिंक है और किस तरह से वो एक्सपीरियंस आपको मदद करेगा. एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज लेट मी नो फॉर अ पर्टिकुलर आंसर. इफ यू वांट मी टू रिपीट इन इंग्लिश, आई विल डू दैट. सो अभी मुझे ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था, सो आई एम आंसरिंग इट इन हिंदी. ठीक है. तो क्या होता है कि जब आप जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं, आप क्लरिकल में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि आप, पहली बात तो ये कि आपका वहाँ वर्क प्रोफाइल क्या था, आपने क्या सीखा है, आपने क्या किया है. एक और चीज़ होती है, आपके बैंक के बारे में भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपके बैंक के कुछ स्पेसिफिक्स भी पूछे जा सकते हैं. उस समय जब I appeared for that interview in NABARD IT officer for that role. So that was a time of merger of banks. So our bank was merged. Union Bank of India was merged, and we were using Finacle 10, and Andhra Bank was using Finacle 7. Corporation Bank was also using Finacle 10. For those of you who are not aware, Finacle is the software that we use. It is the core banking solution, CBS. So one of the questions was it difficult to migrate from, uh, we have to get Andhra Bank migrated from Finacle 7 to 10, right? तो वॉज इट डिफिकल्ट, वॉट वर द चैलेंजेस. तो आपके बैंक के स्पेसिफिक्स, अगर कोई रीसेंट डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड, तो उसके स्पेसिफिक्स पूछे जा सकते हैं बिल्कुल. वो तो बिल्कुल आप एक्सपेक्टेड रखिए. अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आपने जो भी चीज़ें, ओके, एंड वन मोर कमेंट इंग्लिश प्लीज. ऑल राइट. So yes, if you are already working in a bank as a clerk, so you can, what questions are expected. So what is your work profile right now, in what section are you managing, and what all you have learned till now. Have you cleared JIIB and CIIB exams? Then one more question can be there. Why do you want to move from that? But that is a obvious thing that here we are appearing for. um, the This is equivalent to PO cadre, no? So that is for sure for growth perspectives, we can say. But one more thing. Okay, so you're working in RRB, so what can be asked? That is your question. All right. So they can ask you, oh yes, so how your work at the regional rural bank can help you here in Bank of India, whatever you have learned. So you can tell them that since you have actually worked in a bank and see, one very important thing that you all must note is bank specialist officer, IT officer, what they do. See, the regular customers are the customer of branch, and your customer is the branch. So for IT officers, the branch is their customer. So all the branches are their customers. So you have to assist the branches so that branches can assist the general public. Okay. Now, since you have already worked in a branch, you understand what kind of issues you face as while you're working in branch, and what kind of support you require. You might also have called the DIT, the Department of Information Technology of your bank, because we face a lot of issues there. It happens that Finacle is down, this thing is not working, that thing is not working. So branches, what they do, they just call the Department of Information Technology. Now it's the work of Department of Information Technology to assist the branches in the best possible way. So you can tell them that you were all on the other side of the you were playing the you can say you were on the other side of the table earlier, and now you are just going to be on this side, so you understand what kind of support is required by the bank, the branches specifically regarding IT. And one thing, you all must please take care of answering this question well, that what is the role of IT officer. What is the role of IT officer is a very crucial question. Why? Because we are generally not aware of what kind of job the IT officers do. Because you know what, we all know, we all have visited branches since we were a kid. We have visited branches, we know how it works. But
seriously, we do not mm, know uh, even half. I'll tell you, we were appearing for the interview, and in on that particular day, I think 20 people were there at that time for that slot, and believe me, 18 people were not aware of what exactly we are going to do as IT officers, because that is something who is going to the Department of Information Technology every day anyways, right? So yes, research well for that answer. If you want, I can tell you what is the role. So if time permits, we'll move to that as well. I'm getting another question. Okay, तो निशित जी, आई होप दैट यू क्लियर कि क्या पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क यू अबाउट ये यही सभी चीज़ें जो बैंक का वर्किंग होता है, किस तरह से आईटी से लिंक्ड होता है, और जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई वो चीज़ें. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, ma'am, did gap year matter to them in interview marks? So how many years of gap you are having, Ranjana ji? Okay, so please answer this question. I'll tell you. And Nishit ji, so Nishit ji saying, yes, ma'am, most often I call my IT officers for a problem. Yes, right. So you can relate to it. Now you will be on the other side. You will be resolving the issues. So you can act, or you can actually tell them that you are enthusiastic about being on the other side. Okay. Then the next is Ranjana ji is saying, okay. Pallav Sharma ji is saying gap related problems. So Pallav ji, how many years of gap are you having? Ranjani ji is saying which type of questions from project can be asked. Okay, so if let's say my project was on Internet of Things, so first, what was your project? Please tell us about something about that, and that too, if you include it in your introduction, they are going to ask you. Otherwise, they may forget about it. So if there is something that you want to flaunt, let's say you have actually worked very curiously on in a particular thing, and you have put in a lot of efforts, and you want to showcase that to them, so yes, you can include that. Now, what kind of questions? First of all, what was your project? Then the next question, let's say your project was on Internet of Things, so they can ask you that how you the banking technology can be improved. Okay, how the bank how you can integrate this thing in banking. Okay, तो मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के यूज़ से आप बैंकिंग के जो इश्यूज हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, वो पूछा जा सकता है. ओके, ऑल राइट. ओके, ऑल राइट. सो यस, जैसे कि अब आप वी कैन टेल देम दैट वी कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द energy efficiency system, like ATMs. We can have the sensors, we can have when cash levels go down in an ATM, and we see a lot of people facing issues that okay, we this ATM is out of cash. What if there were a internet of thing based system that would indicate as soon as the cash level goes down, automatically they'll be notified also, something like that. Matlab, we have not worked on that, but yes, we can think of the innovative solutions that we can provide. This was a question in my interview as well, that what are the things, what do you think, how we can improve the technology usage in banks, how we can make banking system more efficient using technology. So the things that they are already using, they are aware of that. Now what you have to do, you have to inform them, that what kind of innovate, like उनको ये जानना है ना कि आपका दिमाग कितना इनोवेटिव सोच सक रहा है, आप कितना समझ पा रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, राइट? तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई टू इनोवेट. लाइक while you are, let's say you are traveling tonight, think about it. If they ask you that what else we can do to make banking system better, तो how we can answer that, ठीक है?
So that is something that you can tell them. Any more questions? See, we have the technology has actually evolved so much. We have so many things that we can do with it. Like, let's so we were talking about IoT, na, Internet of Things. So let's discuss about that. Smart ATMs, if you have heard of this term. So IoT enabled ATMs, if we have, so they can provide real time data on the cash levels and the maintenance needs and the security breaches if something is happening. So this can ensure that ATMs are always stocked. There is never an issue of um, this their out of cash issue, and it is well maintained. As soon as they notice that, notice as in the IoT sensors will uh, help them to understand that, okay, so the ATMs are not well managed, so you can act on that, right? Then there is asset tracking, that also you can do. So bank can use the Internet of Things to track the location and condition of valuable assets like the cash in transit vehicle or high value packages. So it ensures first of all security, then there is timely delivery as well. So that is there. Then customer experience in that as well, IoT can be of great use. So the devices, the Internet of Things devices in bank branches can gather data on customer behavior, helping the banks to optimize the branch layouts, improve customer service, and reduce the waiting times as well. Then, for definitely, we all know that for security point of view, IoT sensors and cameras can definitely monitor the bank premises 24/7, and they can alert security personnels to any unusual activity that might be happening. And additionally, the biometric authentication via Internet of Things can enhance the account security as well. Okay. And then one more thing, so I'm just telling you these fodder points, you can use it in interview as and when required. It happens that we are out of ideas, so I'm just putting in ideas in your head, that so that if at all some question related to technology comes there, so how you can tackle that. So then in payment and transactions as well, Internet of Things devices can facilitate the contactless payments and mobile banking. So it will improve the convenience for the customers. Wearables like smartwatches can be used for payments, so that is also something that you can tell them. Then in risk management as well, IoT can be of great use. So Internet of Things can provide real-time data on the weather conditions, traffic patterns, external factors that may affect the lending decisions or insurance underwriting. Underwriting. So these things are something that you can mention there. Then there is this mm, one more thing is there, I'm just forgetting about it. Supply chain financing is also there. So for the corporate banking, Internet of Things can be used to track the condition and location of the goods that are there in the transit. So it will allow for more accurate and secure supply chain financing. Okay. So these are some of the things. Now let me check your comments. I have not. Okay, just a minute. Just a minute. Role of IT officer. Yes, I'll explain. Mm, okay. Which type of questions? Project, we have talked about it. Role of IT, I'll tell you about it. I am also having 4 year gap. What to say? So during those 4 years, were you involved in some other things, like were you preparing for something? Were you um doing some part-time jobs, freelancing, tutoring, anything like that? Or you have worked on your own skills, or you were engaged in some other things? What exactly was it? You can tell me, I'll try to help you out with that. um, Thank you very much for sharing the information. Most welcome, completely my pleasure. Thank you. Okay, Rima Oplaji, why should I hire you? What should be the answer? So you can depending, so this question is very personal. You can okay, why should I hire you? Okay. Now, answer to this question,
is very personal. So, can you tell me a little bit about your profile, what you have done in your graduation years, or have you worked somewhere? If you tell me something about yourself, I'll try to frame an answer for you. इसी तरह सभी लोग, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप ये कर सकते हैं कि अपना जो भी प्रोफाइल है आप मुझे बताएं, तो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट. तो अपनी प्रोफाइल, दे आर आस्किंग वन क्वेश्चन दैट बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बिकम प्राइवेट, व्हाट इज योर व्यू, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन. अच्छा. अच्छा. तो मतलब बेसिकली दे माइट बी इंटरेस्टेड टू नो कि आपका मेन जो गोल है उस कुछ पब्लिक सेक्टर में काम करना है कि बैंक में काम करना है. मतलब हो सकता है ना, बहुत लोग ऐसे हों जो पहले अपने किसी आंसर में ये बोल चुके हों कि आई वांट टू जॉइन दिस बिकॉज आई वांटेड टू वर्क इन पब्लिक सेक्टर बैंक, and later on they are changing their answer to it does not matter whether BOI is private or public sector bank. So sometimes it also happens, so you have to take care of the fact that your answer should not conflict. That would leave a very negative impression, so always have in mind what you have answered previously. So talking about Rima ji's question, why should I hire you? Okay. So see, in general, since I don't know your profile exactly, uh, what exactly is expected from this question, so you have to highlight your qualifications, your skills, your experience, anything, if you have any experience. Acha, one thing I want to tell you all, don't get demotivated if you are a fresher, you have not worked for any organization till now. It's not an issue. When I was hired in a bank as an IT officer, I was also a fresher, so it does not matter at all, believe me. If you have the right skill set, if you have the clarity of thoughts, if you are the right candidate, if you have good marks in mains, definitely you have worked hard for this. And at a point of time, everyone is fresher. There's always a first job, na? So what would happen if everyone is looking for just experienced candidates? So, and if it was the case, they would have mentioned it in the notification itself. So it's, there's no such case that only experienced candidates are getting preference or something like that. No, that's not true at all. Although, and experienced candidates as well, please keep in mind that if you're working somewhere, you should be good with what you're doing. If I'm asking you what do you do in your present job, and you're not able to tell me what is your current role, that tells me that you're not good at what you're doing currently. And how would I expect you to be good at something later on if you're not good at your job right now? So that you should keep in mind that if you're working somewhere, prepare a very good answer of what all is what is the job role, what are your responsibilities in that particular job, and what are your learnings from that job, what are your interests, what do you like about that job, everything you should be clear about. All right, now if someone is asking you that why should we hire you, so you have to highlight your qualifications, your skills, and the experience that makes you ideal candidate for the role. And the experience can be as small as some projects that you may have pursued, or you can just show your interest that I'm interested in this field, I have read about this thing, I'm in my free time I have finished this certification, if you have done. So something like that. Now I'll guide you with a sample answer to this question. So if I were you, I would have told them that I believe I'm the right fit for the this Bank of India IT officer position
for certain reasons. Let me tell you about those reasons. So first of all, I'll tell them that I have the technical expertise. So I have a strong background in information technology with if I'm having some experience, so I would say that with these many years of experience, if I'm not having any experience, in that case I would say that I have a strong background in information technology. I've completed my degree in whatever graduation field you had, so that I would have mentioned. So I'm assuming that I'm having some experience. So I have a strong background in information technology with 3 years of experience in managing and implementing IT solutions in this particular company, whatever it is. Now, my technical skills include. Now, I'm going to include certain things that are relevant here, and that those are my skills and what is relevant here. So, my technical skills include. Um, Network security, software development, database management, etc. So I know I'm interested in these subjects, and I know bank is having so much use out of these subjects. So it is relevant to the bank, and it is relevant obviously to me because I like these subjects. I'm having a keen interest in these subjects. So that's how. Now, I am up to date with the latest trends and the technologies in the field, which is crucial for maintaining the bank's IT infrastructure. This is my first point. Then I would move to understanding of the banking operations. So I will explain them that I have a deep understanding of banking operations and the regulatory requirements. During my if you are not working, you can say during my graduation. If you are working somewhere, you can tell them that during my tenure at this particular organization, I worked very closely with anything that relates. I'm not saying to fake any answer at all, but something might be there now that is related. So think about it. If you're not working somewhere, you're not working anywhere, okay, and in your graduation, you definitely would have studied something about network security or these things. And even if there is someone like इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के कोई अगर हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आप ये अभी तो एग्जाम के लिए तो आप पढ़ ही रहे हो, तो उसको ही आप बता सकते हो कि since I have keen interest in these subjects, I believe that I can contribute to the bank with my skills. ठीक है, ये अपन बता सकते हैं. And then you can highlight your problem solving abilities as well. So throughout my you can say academic years, I have always successfully resolved the complex problems that are related to IT, of whatever, like from whatever knowledge I had, utilizing the best of whatever I had. I have done this and that, whatever it is. You can frame your own answer based on this. So I have a very like my purpose of telling you this is to show them that you have a keen eye for this you have problem solving abilities. That is what I'm trying to convey here. Then team collaboration, you can say that I recognize the importance of teamwork in a banking environment, and I have throughout my academic years as well, and throughout the projects and various things that I have pursued in my career, I have experience of collaborating with cross-functional teams, um, including diverse range of people. Okay, and everyone having their own mindset and still um, making them work together in a team, something like that. Okay, so to achieve a common goal, you have to work in team, and that you understand the value of that. That also you can highlight there. Then adaptability. So the banking industry is dynamic, and technology evolves rapidly. And I would have said that I am adaptable, and I have a history of quickly adapting to new technologies, regulatory changes, industry best practices, and to keep the bank's IT infrastructure competitive and secure. Then they would ask you, what would you suggest that we can do in the banking, we can do to improve our or to get an competitive edge over other banks. So you should have some ideas for that as well. Okay, I missed a lot of comments here. Let's see. Why should I hire you, Rima Opla ji? Clear?
एनीथिंग लाइक अपनी स्किल्स बताओ, अपने क्वालिफिकेशन बताओ, अपने आइडियाज़ बताओ, अपना इंटरेस्ट बताओ। मुझे इंटरेस्ट है इस फील्ड में, मुझे लगता है जहाँ मुझे इंटरेस्ट है वहाँ पे मैं 2x काम करके भी बहुत बेहतर कर सकती हूँ। अगर मुझसे कोई चीज़ नहीं आती है तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 9 months ऑफ ट्रेनिंग आई वुड पुट इन डबल एफर्ट्स देन द रेस्ट ऑफ द पीपल टू मेक श्योर दैट आई एम गुड एट दिस। और मतलब मैं अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ है वो चीज़ें या पहले एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो 9 महीने की ट्रेनिंग होगी उसमें आई विल मेक श्योर टू रीच दैट लेवल। ठीक है, तो और टू इवन सरपास दैट एज वेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो राहुल जी saying I was firstly preparing for UPSC engineering service, but after 2 years of preparation I was unable to clear the exam, so switched my preparation to banking sector. Good enough na, you can tell them, you can tell them. So you were trying hard to get into that, and it's sometimes a matter of a few marks we miss out on certain exams na, so it's not our mistake. So you can tell them, and with that you must have learned a lot of things. You can tell them that mm, I understand the value of perseverance. You can tell them that you understand the importance of hard work, the importance of dedication. These things are there. You have, you were not just, that was not just a gap. Over the years, you have acquired a lot of skills. You have learned a lot of things. It's not necessary that always you're going to get something out of, if I'm putting in efforts for a particular exam, it's not necessary that I'll get a job there, but I'm surely going to get a treasure out of what I have learned over the months or years. तो जो इतने समय में पढ़ाई का, मैं नहीं कह रही हूँ किताबी नॉलेज, बट ये है कि अगर हमने कुछ सीखा है ना, कोई भी चीज़ हम अगर मेहनत किए हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो कभी ख़राब नहीं जाती है. इट इज़ गोइंग टू help you, it is going to have a big impact in your life, and it is definitely going to be something you're going to be proud of, that yes, I worked hard for this. Even though I did not get that job, it has taught me so much that is useful in whatever job I am currently pursuing. So this is the positive attitude that you all must have. ठीक है, any other questions, anyone? किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं. कोई हिंदी स्पेसिफिक हैं, कोई इंग्लिश स्पेसिफिक हैं, जो भी हैं बता सकते हैं आप लोग. बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है आप लोगों को. एक बात समझिए कि कुछ भी ऐसा नहीं है, एक कॉन्वर्सेशन जैसे ही होगा इंटरव्यू, कुछ भी नहीं होगा ऐसा. आप लोगों को बस ये करना है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं इंटरव्यू में, आपको लगता है जो यूज़फुल है, तो आप उसको अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर दें. तो उससे ये होगा कि उनको भी एक डायरेक्शन मिल जाएगा. जैसे कि अभी आज ही क्रेडिट ऑफिसर्स का इंटरव्यू हुआ, तो एक कैंडिडेट ने इंटरव्यू में कुछ एक कोई चीज़ बता दी अपने बारे में. अब वो पूरा इंटरव्यू, क्रेडिट ऑफिसर तो छोड़ो, वो पूरा इंटरव्यू ना उसकी वो पर्सनल लाइफ पे ही हो गया. तो बात ये है कि आपको उससे आप एक डायरेक्शन दे देते हैं उनको कि किस तरह से आप किस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, तो वो उसी एरिया के क्वेश्चंस पूछते हैं. अच्छा, टॉकिंग अबाउट टेक्निकल क्वेश्चंस, इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे नॉट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. तो उसमें क्या होगा कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो आंसर, तो फिर उस केस में क्या करना है, आपको बहुत पोलाइटली उनको बता देना है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब सारे क्वेश्चंस अपन से बनेंगे, वो होता ही नहीं है, वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि वो लेवल मतलब वो तब तक पूछते रहेंगे जब तक आप गलत ना कर दो. क्योंकि दे हैव टू अंडरस्टैंड द बार कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ तक कि ये सही बताते जाएगा. कहीं ना कहीं तो हम सभी रुकने वाले हैं. तो उस चीज़ से ना घबराएं. अगर इंटरव्यू में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया है तो भी बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि वो आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच, आपका बहुत पर्सनैलिटी टेस्ट होता है बेसिकली. तो वो जो है वो आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है. नॉलेज आप रिटन एग्जाम में बता चुके हैं. इंटरव्यू में अगर उन्हें लगता है दैट यू आर कीन टू लर्न, यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, ऐसा नहीं है कि कुछ और टाइम नहीं पास हो रहा था तो बस आ गए बस बैठने, ये नहीं लगना चाहिए. बी एंथुजियास्टिक.
show your interest in that field, show why you want to be there. और थोड़ा सा मतलब जो लोगों को, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ वो, दैट इज़ नॉट ईजी इफ़ वी आर एक तरह से हम कर, जिस तरह से हम रहते आए हैं ना इतने साल से, तो वो चीज़ होती है, वो हमारी आदत में होती है। पर आप बस ये समझिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से सिर्फ 15 मिनट के लिए बाहर निकलना है, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल लो, थोड़ी कोशिश कर लो कि आप वहाँ पे खुल के बोल पाओ, ठीक है? तो अगर आपने वो कर लिया ना, तो यू वुड नॉट रिग्रेट इट फॉर श्योर। तो इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आंसर विथ कॉन्फिडेंस, आंसर विथ अ स्माइल। इंट्रोडक्शन में थोड़ा बता दिया ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये नहीं कि अच्छा, कुछ लोग इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहे हैं, नाम बताया, कॉलेज बताया, स्कूल बताया, मम्मी का नाम, पापा का नाम, मम्मी ये करती हैं, पापा ये करते हैं, भाई ये करता है, बहन ये करती है, और मुझे टीवी सीरीज देखना पसंद है, बस खत्म। तो इस दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट ना, सो जस्ट ट्राई टू इंक्लूड समथिंग पॉजिटिव इन दैट एज वेल, समथिंग दैट shows your interest in this field as well, and that would be great. Acha, now talking about technical, any doubts? Okay, I got one comment here. Rahul Kumar ji is saying, "Thank you, ma'am, for your words. Has motivated me a lot. Thanks for your guidance. Thank you so much. Thank you so much. I'm glad that you liked it. I'm glad that I was able to help you to get motivated before the interview. It really matters a lot. I know, that's why I was even though I was feeling really sleepy, I thought no, I would just take out some extra time and just interact with you all to boost your confidence. So okay, any other doubts, or shall we close the session? In technical, if they are asking, let's say they are asking questions based on this okay, one more doubt here. Ranjana ji saying, ma'am, please some question on network management. You mean computer network? Okay, sure. Computer network, right? All right. So I'll just first tell you the basic questions, the general questions that you can expect. First of all, what is a computer network? You must know. So how would you answer it? A computer network is a set of interconnected devices like computer, server, router, switches. So they all communicate with each other to share the data and the resources. ज़रूरत क्या है भैया कंप्यूटर नेटवर्क की, वो भी तो पता होना चाहिए। थ्योरेटिकली हम पढ़ लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि इसकी ज़रूरत क्या है, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको, क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग वर्ड अगर आपने यूज़ कर लिया ना, तो वो समझ जाएंगे कि यू हैव प्रॉपर आइडिया ऑफ द एक्चुअल यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है? देन देर इज़ another very simple question that the difference between LAN and WAN, that also you can answer. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। OSI मॉडल पे क्वेश्चन आ सकता है, उसकी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है? उसके बाद आईपी एड्रेस के बारे में पूछ सकते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है, एंड व्हाट आर डिफरेंट आईपी एड्रेस क्लासेस दैट आर देयर. You may be aware of this, that we have class A, class B, class C, class D, class E. These are the no, classes, and E is reserved for experimental use, that also you must know. Then you might have heard of this subnet mask. So they can ask you what is the purpose of subnet mask. So what is that? It is nothing, it is just used to divide an IP network into subnetworks, allowing the efficient IP management and routing. That's it. So you can answer this. Then the difference between UDP and TCP, very common question. You can answer it easily. बहुत आसान है यार। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, UDP कनेक्शन लेस होता है। टीसीपी रिलायबल होता है, क्योंकि अब सोचो ना, टीसीपी में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके बाद बात हो रही है, जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। यूडीपी क्या कर रहा है? यूडीपी बस भेजते जा रहे हैं, पहुँचे तो पहुँचे, ना पहुँचे तो ना पहुँचे। तो टीसीपी में क्या होता है कि डेटा जो होता है वो पहले एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ भाई हमें मिल गया, फिर ही अगला भेजता है। तो इससे ये है कि भैया सारे पैकेट्स पहुँचेंगे पक्का है। 3 वे हैंडशेक का यूज़ होता है। और यूडीपी में ऐसा है कि रैंडमली बस
करते जा रहे हैं आप डेटा को ट्रांसफ़र, पहुंचेगा तो ठीक है, ना पहुंचे तो ठीक है। तो यूडीपी अनरिलायबल हो गया, टीसीपी रिलायबल हो गया। अब टीसीपी में और क्या बात आती है? तो टीसीपी करंट मैंने बता दिया कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी कनेक्शन लेस है। अब टीसीपी क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है तो उसको डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टीसीपी स्लो है कंपैरेटिवली और यूडीपी फास्ट है। तो जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि डेटा लॉस की इतनी फिक्र नहीं है, वहाँ पे हम यूडीपी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो फास्ट है। ओके, डीएनएस क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे। एंड हाउ डज इट वर्क डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो क्या है भाई डोमेन नेम सिस्टम? मुझे अगर आज यूट्यूब ओपन करना है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा टाइप करती हूँ 10.25.255. समथिंग लाइक दैट। लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ यही लैंग्वेज समझता है, नेटवर्क तो यही समझता है। तो फिर क्या हो रहा है? तो फिर उसको भी जो लैंग्वेज समझ आती है वो मैं याद नहीं रख सकती, मुझे जो समझ आती है वो नहीं समझ सकता। तो फिर हमारे बीच में एक मीडिएटर है, डोमेन नेम सिस्टम। सो डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट्स द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स लाइक www.youtube.com into IP addresses. ठीक है, so it works by maintaining a distributed database of domain names and their corresponding IP addresses. तो this is how it works, the DNS. अच्छा, तो डोमेन नेम सिस्टम हमें समझ आ गया। उसके बाद और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? तो डीएचसीपी भी पूछ लेते हैं कभी कभी, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पूछा जाता है। तो okay, that's great to know. Abhishek ji is saying, thank you so much, ma'am, listening you from train. Thank you so much. It shows your dedication, and I really wish you all the best. May you succeed in this exam, in this interview. Okay, okay, okay. तो नेटवर्क पे हम डिस्कस कर रहे थे। Okay, एक मिनट, प्रकाश संथी जी is asking if we inform them that I have done MBA in self introduction, will they ask more question on MBA in depth? See, they do not know the like all your in depth concept of matlab, I'm not saying that, I'm saying that they would not ask you very typical questions. Questions could be, if you are pursuing MBA, you can go for private sector job as well. You will get great packages there. In corporate sector, we have much higher packages than what we get in banks. So why do you want to join this where you have to undergo a training so long and then you'll get the job and something like that? So you should have a clear answer of that. Then apart from that, yes, how your management skills that you have acquired can assess the bank. Then if you are pursuing MBA, acha, you have completed it now. There were some candidates who were still pursuing MBA, so for them it is going to be um, difficult to answer that question, that you are in the first year of your MBA and now you want to go for this job. So what is your motivation? So for them, a lot of people, they told me that MBA was their backup option and they were just waiting for this exam, but MBA was their backup option, so that you can tell them whatever is the genuine thing. ऐसा होता है भाई, हम सभी एक बैकअप ऑप्शन लेके चलते हैं हमेशा। हर ऐसा नहीं है ना कि जो हमने पहले से सोचा है बस वही करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेंजेस होते हैं, फिर बैकअप ऑप्शंस हमें दिखते हैं, फिर लगता है अरे ये तो और बेहतर है, तो जो हम कर रहे हैं उससे बेहतर ऑप्शन तो ये रखा हुआ है। तो इस तरह से आप उस चीज़ को एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन वेब डेवलपमेंट पे। अच्छा, अभी अपन कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, फिर वेब डेवलपमेंट पे बात करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओके, फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ फायरवॉल एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन नेटवर्क सिक्योरिटी? दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, इट इज़ extremely important question, you cannot miss it out. So what is a firewall? It is a network security device that monitors and controls the incoming and outgoing network traffic, and it's essential for protecting a network from unauthorized access and threats. That is what a firewall is. उसको एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी बता सकते हो, उसको आसान शब्दों में भी समझा सकते हो।
फ़िल्टरिंग का काम कर रही है ना बीच में, कि कौन सा ट्रैफ़िक अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि हाईली अनसिक्योर एक नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट, वो है बाहर, और बैंक का अंदर इंटरनल नेटवर्क है जो कि एक सिक्योर नेटवर्क है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर इज कमिंग इन एंड व्हाटएवर इज गोइंग आउट, इट इज बीइंग मॉनिटर्ड प्रॉपर्ली. So that is the right answer. Then VLAN is also something important, that is virtual local area network. Don't worry about that though, too much about that though, बिकॉज इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे. राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, राउटर और स्विच में क्या डिफरेंस होता है, that also you can have a look at. Then network address translation, NAT. So what is that? So NAT, this network address translation is used to modify the network addresses information in packet headers while in transit. तो रास्ते में उनकी वो जो ट्रांजिट में जब होते हैं ना, तब उनका जो नेटवर्क एड्रेस है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिनायल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस. तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. देखिए, बहुत लोग ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों को टेंशन नहीं दूंगी सिर्फ क्वेश्चन बता के. अगर मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ तो मैं आपको आंसर भी बताऊंगी, जिसमें आप सुन लें एक बार, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा वो कि किस तरह से आप आंसर कर सकते हो. तो अगर हम इसकी बात करें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की, तो जब अगर आपसे ऐसे पूछा भी गया कि कुछ साइबर अटैक्स के बारे में बताइए, तो डिनायल ऑफ सर्विस भी उनमें से एक ही है. अब उसमें क्या होता है ना, पहले पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद हम फिर मैं उसको आसान शब्दों में आपको बताऊंगी. तो डॉस अटैक एम्स टू ओवरवेलम द नेटवर्क और अ सर्वर विथ एक्सेसिव ट्रैफिक, so that it becomes unavailable to the users. Now networks defend against it using the firewalls. Intrusion detection system is also there, that is there in banks as well. And then load balancing. Now how you can understand this concept easily. जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो तो ऐसा होता है ना कि आखिरी दिन में अगर भरने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं होता, नहीं भराता है फॉर्म. क्यों नहीं भराता है फॉर्म? क्योंकि बहुत लोग ओवरवेलम कर दे रहे हैं ना नेटवर्क को, तो आप नहीं एक्सेस कर पाते हो. अब ये तो हो गया जेन्युइन केस कि भाई सही में उस दिन एस्पिरेंट्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सही में कोई एक्सेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इंटेंशनली कुछ ऐसे इंट्रूडर्स होते हैं जो चाहते हैं कि वो जेन्युइन यूज़र्स एक्सेस ना कर पाएँ, उसके लिए वो ये काम करते हैं कि अगर मैं डिनायल ऑफ सर्विस की बात करूँ तो नेटवर्क को ओवरवेलम करने की कोशिश करते हैं. और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस की बात करूँ, मतलब डीडॉस अटैक, तो उसमें वो क्या करते हैं कि बहुत सारे सिस्टम्स में वो बॉट्स लगा दिए जाते हैं और वो कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट पे. अब वो वेबसाइट ओवरवेलम हो गई. अब ऐसे सोचो, अभी मैं यहाँ पे आपके साथ लाइव जुड़ी हुई हूँ, मेरा इंटेंशन है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ इंटरव्यू में. अब आपके कमेंट्स मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं आपको आंसर करना चाहती हूँ, लेकिन यहीं पे अगर कोई अनवांटेड एलिमेंट आकर और कंटिन्यूसली हमें डिस्टर्ब करता रहे, कंटिन्यूसली चैट में मैसेजेस डालते रहे, या यहाँ से मेरे साथ सामने आकर कोई कंटिन्यूसली मुझे अननेसेसरी रिक्वेस्ट देते रहे. शुभी, टाइम क्या हुआ है? शुभी, आज डेट क्या है? शुभी, इस ये याद है क्या? इस तरह से, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट. तो मैं वहाँ इंगेज हो जाऊँगी और मैं यहाँ पे जो एक्चुअली यूज़र्स हैं, जो एक्चुअली अभी एट दिस मोमेंट मेरा अटेंशन जहाँ रिक्वायर्ड है, मैं नहीं दे पाऊँगी. तो ये जो हो रहा है, डिनायल ऑफ सर्विस हो रहा है. क्यों? मैं आपको वो सर्विस नहीं दे पा रही हूँ, जिसका जो मेरा इंटेंशन था वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, अगर मुझे मेरा फोकस डिवाइड किया जा रहा है तो इस तरह से होता है डिनायल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस. इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वीपीएन. आप सब जानते हैं क्या होता है. सो वीपीएन क्या है? सिक्योर कम्युनिकेशन टनल है ओवर अ पब्लिक नेटवर्क, ठीक है, मतलब मोस्टली इंटरनेट की बात कर रही हूँ मैं. So it allows the users to access private networks or browse the internet securely and anonymously. It's used for remote access, data encryption and privacy protection. ठीक है, ये हो गए अपने इसके क्वेश्चंस. ठीक है, और कोई डाउट्स?
कोई और डाउट? ओके, अभी एक क्वेश्चन आया था किस पे, वेब डेवलपमेंट पे। वेब डेवलपमेंट पे आपसे उतने क्वेश्चंस मुझे उम्मीद नहीं है कि पूछे जाएं, उतना नहीं लगता। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़े कुछ मतलब मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो बता देती हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं एक बार। पर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वेब डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपका उतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए डीबीएमएस है, आप बोल सकते हैं कि एक तो ये है कि भाई आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, आई विल श्योरली रीड अबाउट इट। दूसरा ये कि काफ़ी टाइम आपको हो गया है, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो वेब डेवलपमेंट पे अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, जो मतलब जैसा कि आपने पूछा है, अगर आप कहीं मेंशन करने वाले होगे वेब डेवलपमेंट तो पूछ सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, और वो सारे एक साथ कैसे काम करते हैं वेब डेवलपमेंट में, ये एक चीज़ हो गई, पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपने सुना होगा ये बॉक्स मॉडल होता है सीएसएस में, तो वो लेआउट और डिज़ाइन को कैसे इम्पैक्ट करता है, क्या होता है वो। उसके अलावा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होती है, और मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन क्या होती है, और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये भी पूछा जा सकता है। देन देर इज दिस थिंग, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जावास्क्रिप्ट में होता है ना, डॉम, वो पूछा जा सकता है। बट बाकी लोग फिक्र मत करो प्लीज़, अपार्ट फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ एक्चुअली वर्कड इन वेब डेवलपमेंट, others need not to worry about that. They are not going to ask such detailed questions. Since I was asked to provide certain questions on that, that's why I'm telling you, no need to worry about that. Then if you're including it in your experience or something like that, in that case they can ask, otherwise no. Difference between get and post request in http, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, एनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूलिंग टेक्निक्स है ना, जैसे राउंड रॉबिन हो गई, और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन, और मतलब जैसे अभी अपने पास टाइम कम है, तो अपन क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, तो आप उनको एक नज़र देख लें अगर टाइम अलाउ करता है तो। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। आपको इसके आंसर्स भी चाहिए क्या? आंसर्स भी चाहिए? डू यू ऑल वांट आंसर्स एज वेल और जस्ट द क्वेश्चंस? अच्छा, जितने लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं भाई, अगर पसंद आ रहा हो सेशन तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आपका अटेंडेंस मिल जाएगा मुझे। ठीक है मैम। अच्छा, अरे दैट्स कम्प्लीटली माय प्लेजर रंजना जी। आंसर्स ऑल्सो, अच्छा ओके प्रकाश जी, ओके ओके, ऑल राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, आई हैव आस्क्ड यू दैट व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाई इज इट, लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ इट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है that manages the hardware resources and provides services to the applications as well. Its main function is the process management first, then memory management, file system management, then user interface management. These are some of the functions of the operating system. ठीक है? Then one more question that can be asked is here, difference between multitasking, multiprocessing and multi-threading.
That is also something that could be asked. तो in that what we can वो तो बुकिश डेफिनेशन ही है. मल्टीटास्किंग क्या होती है? It allows the multiple tasks to run concurrently on a single CPU. Then multiprocessing is also there, so that involves multiple CPU executing tasks in parallel. And multi-threading means multiple threads within a single process to run continuously. Thread और process में क्या होता है difference? Thread एक unit होता है ना उसका, और multiple threads से मिलके process बनती है. So that kernel पे question पूछा जा सकता है, kernel क्या होता है? तो kernel is the core component of the operating system, responsible for managing hardware resources, providing essential services, and mediating interactions between software and hardware. Operating system at the end कर क्या रहा है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में वो क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन बना रहा है ना वो. तो आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा चलो ठीक है. डेडलॉक की कंडीशंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डेडलॉक की कंडीशंस क्या हैं? असेंशियल वो होते हैं ना कंडीशंस. अरे सर्कुलर वेट, देन देर इज वन मोर सर्कुलर वेट, एंड what is the condition? I'll tell you just a minute. There is अरे यार, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ना. आपने पढ़ाई की है, मैंने थोड़ी की है. बहुत साल हो गए हैं मुझे. आप लोग बताइए क्या होती है कंडीशंस. बताइए, पूछी जा सकती है भाई. देखो ठीक है, चलो मैं बताती हूँ. म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि, देखो अगर कोई भी रिसोर्स शेयरेबल है तो फिर लड़ाई क्यों होगी? शेयरेबल नहीं है, वहाँ दिक्कत है ना. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब 4 कंडीशंस होती हैं एक्चुअली. And if these 4 conditions are, these are necessary conditions for deadlock. And even if there is let's say um, these are the conditions that must be present for deadlock to occur in the system. So what is deadlock? Basically a situation where 2 or more processes are unable to proceed because each one is waiting for the other to release a resource. Let's say me and my brother, we are fighting. I have the AC remote, he is having the TV remote. I'm saying, give me the television remote. He's saying, no, give me your AC remote first and then I'll give it to you. So we both are stuck in this situation. We are saying, पहले आप मुझे दो फिर मैं देती हूँ. फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप रिमोट दोगे तो मैं दूंगी. इस चक्कर में ना दोनों ही फंसे रहेंगे. ठीक है. और अगर ये शेयरेबल होता तो ये कंडीशन आती ही नहीं. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है. दैट मीन्स one person can have it at a time. So that is the reason why that is one of the condition for deadlock, that mutual exclusion. Then hold and wait, that means I'm holding one resource and waiting for another resource. अगर मैं रिलीज कर दूँ एसी का रिमोट और उसके बाद टीवी का ले लूँ तो हो जाएगा, बट आई एम होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर वन ना. दैट इज द इशू. देन नो प्रीएम्पशन and then circular wait. These are the 4 conditions for deadlock. ठीक है. आई होप दिस इज सफिशिएंट. काफ़ी लेट हो रहा है अपन को. अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह. अभिषेक जी सिंह सुपर लाइक, थैंक यू सो मच. थैंक यू. जावा से पूछ सकते हैं क्या? आपका कोई प्रोजेक्ट बताओगे क्या आप जावा में? प्रकाश जी सिंह, थैंक यू सो मच मैम फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम. इट वाज कंप्लीटली माय प्लेजर. आई एम ग्लैड दैट आई कुड हेल्प. कोई भी डाउट हो तो बताएं मुझे. बहुत बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं असिस्ट कर पाऊँ किसी तरह. तो अच्छा, तो शांतनु जी सिंह टू डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम जावा. सी, if you show some interest in Java, like you have some projects in Java or any other specific thing, then they are going to ask. But still, if you want, we can discuss a few questions from Java as well. So let's see. And those who have not studied it, don't worry. You can just tell them that I'm sorry, I'm not. I have not revised it.
recently. ठीक है, तो difference between this JDK, JRE and JVM, that can be asked. JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, एंड JVM क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. गला तो क्या है यार. ओके, so JDK, JVM and JRE. Now concept of object oriented programming in Java, ये C++ में भी आएगा. OOPS concept in C++, in Java, सब पे इम्पॉर्टेंट है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, तो यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. अच्छा, वन मोर थिंग, वाटरफॉल मॉडल एंड दीज, अजाइल मॉडल एंड दीज, इफ यू आर गेटिंग सम टाइम यू कैन हैव अ लुक एट दैट एज वेल. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा, very important question. Object oriented programming in general, encapsulation and polymorphism and abstraction and inheritance, you should be able to explain these concepts to them. Difference between double equal to operator and equals and bracket method that is there in Java when we are comparing two objects. What is the difference between these? That also can be asked. Main features of Java and why it's considered platform independent. Difference between abstract class and interface in Java, important. Concept of method overloading and method overriding in Java, that is also important. Easy है, बहुत simple है. Java constructor क्या होते हैं, what and how it is different from regular method. Then ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब इजी. अगर आपने पढ़ा है तो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल मत घबराएं, ये सब हम बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. देन यू हैव modifiers, public, private or protected, default. So what are these access modifiers, how they work and when to use them, that is also something. Static keyword in Java is also important for you. Then exception handling mechanism. But these are the things that I would say, for those who have not studied Java, don't worry about it. No need to worry about it. In fact, you should pay more attention to DBMS, computer network, IT security. Then like if I'm talking DBMS, I've already shared a video discussing the questions related to it. Then this one, I think IT security, very important. Phishing, bishing, spooling, spoofing, you should be aware of these things. It's very important. So that is about that one. Now what else, any other doubts or shall we end the session? अच्छा, क्लाउड पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना आपसे, क्लाउड पे पूछा जा सकता है, इट्स पॉसिबल. क्लाउड पे दे कैन आस्क. ओके, चलो, तो आप लोग जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं, इट्स टू लेट, यू शुड टेक रेस्ट नाउ, बिकॉज देखो, इंटरव्यू में आखिरकार क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो हमें किसी को नहीं पता है, बट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, योर अप्रोच टुवर्ड्स इट, दैट शुड बी पॉजिटिव. घबराना मत. इफ़ यू आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर गोइंग इन द इंटरव्यू रूम. डीप ब्रीदिंग करिए आप, बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स रखिए, वहाँ घबराना नहीं है, एंड यू विल डू ग्रेट. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज हु वर कनेक्टेड. दिस वॉज माई फर्स्ट लाइव सेशन. Thank you so much for attending the session, and we'll surely meet after your interview, and you will share the interview experience. अपन कोशिश करेंगे कि कल जिनके इंटरव्यू हो गए हैं उनके साथ डिस्कशन करें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. चलिए, ठीक है. थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन. टेक केयर. विश यू ऑल द बेस्ट. एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बाद में भी लिख सकते हैं. आई विल एड्रेस दोस डाउट्स. थैंक